अस्सलामुअलैकुम आप सब व्यूअर्स को। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो गर्मी का मौसम है और लगता है कोई जगह बीसी में जला हुआ है, जैसा सूरज थोड़ा धुंधला मौसम, थोड़ा सा स्मोकी मौसम है। तो इसी वजह से तो हम गर्मी भी बहुत है, तो हमने सोचा कि पार्क की तरफ चले। तो मैंने कहा आपको एक छोटा सा क्लिप में ये वीडियो डाल दूँ। इसमें आप देखिए कि बाज़ इलाके माशाल्लाह से बहुत सरसब्ज़ सब्ज़ी जो है कहाँ तक जा रही है। ये पहले ये जगह जंगल था, तो जंगल में इन्होंने अपने रास्ते बनाए, फिर घरें बनाए, इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। फिर उसके बाद कभी आप लोग सोचते हैं कि इस तरह सब्ज़ों के दरमियान में रोड के किनारे सब्ज़ी कभी ऐसी लगता है, बोलते हैं ऐसी और नहीं। ये इन्होंने जंगलों को खोदा हुआ है जिसमें इन्होंने शहर बनाया। तो ये आपके सामने है, आपको चार तरफ से दरख्त ही नज़र आएंगे, सिर्फ दरमियान में रोड नज़र आएगा, सड़क और रोड। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे और सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो और कमेंट दे दें। मैं अपने बेटे के साथ आज आया हूँ आपके। सो हम पार्क जा रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने आपको भी एक मंजरा दिखा दूँ या फिर कोई वीडियो बना के दिखा दूँ। तो आप देखते रहिए। So they are headed to a tie-breaking third set. Once that match is done, we will see Naomi Osaka and Amanda Anisimova. मैं रेडियो सुनता हूँ, आप भी अपना चेक करें। जो सामने है आप देख रहे हो, स्मोकी वेदर है, इसी वजह से बाहर नहीं दिख रहे हैं। Baseball, not a lot of action on the diamond tonight because of the NFL starting up. No Blue Jays. They'll begin a new series with the Yankees tomorrow, up by 3.5 games in the AL East. The Yankees actually on the field right now, though, facing the Astros. It's tied at 1 in the fourth. Sports at 15 and 45 past every hour or anytime. Sportsnet.ca. Hey there, folks. Bro Jake here. Are you a landlord looking for the #1 name in rental property management? Look no further than Peninsula Property Management, the team that's been at it for 38 years strong. Their dedicated 28 experts handle it all. Single-family homes, apartments, condos, townhouses, and multifamily complexes. 100% focused on your rental property. And guess what? 450 glowing Google reviews at a 4.8 star rating. Plus 24/7 emergency maintenance. Visit rentinfo.ca. With the Subaru, a vehicle that's built to last comes standard. Heated front seats? Standard. High ground clearance? Standard. EyeSight Driver Assist to help spot the scooter delivery guy texting, merging, and eating all at once? Standard. Parallel parking perfectly while someone watches? Uncommon. But in a Subaru? Standard-ish. Subaru. Uncommon comes standard. 11:30 news time, 5:48. Good evening. Trade talks with the U.S. and so-called adjustments to the upcoming federal budget. Our Cormac McSweeney reports these topics are in focus on the second and final day of the Cabinet Planning Forum in Toronto. Canadian officials are continuing talks with the U.S. about tariffs on things like lumber, steel, aluminum, and autos. But Trade Minister Dominic LeBlanc says they're now getting into technical discussions around each sector, where Canada believes we can come to an agreement that would be in the economic interest of both countries.
Those discussions start by having base understandings. Meanwhile, ministers also discussing action here at home and the budget coming next month. Finance Minister Francois-Philippe Champagne says it comes at a difficult economic time and will be focused on both austerity and investment. Will there be tough choices to make? Definitely. Is the nation ready? I would say yes. I mean, Canadians have elected us to do things differently. We know the feds will be investing in things like nation-building projects, but Champagne less clear on where the Madam cuts will be Curtis made and Lake if it will made it. lead to layoffs. Okay. He only says there will have to be The word adjustments. lake. Cormac McSweeney, Parliament Hill. Saskatchewan Premier Scott Moe is set to be joined by Prime Minister Mark Carney's parliamentary Okay, secretary boy. on a trip to China as part of efforts to get Beijing to scrap its canola tariffs. Carney